तरक्की की राह पर गामजन इंटरनेशनल मेयार पर तैयार होने वाला स्मार्ट पोर्ट सिटी ग्वादर अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अहमियत की वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। पिछले कुछ सालों में यहाँ तामीराती और तरक्याती कामों का जायज़ा और ख़ुसूसन न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्वादर पर तामीराती काम की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। पिछले कुछ सालों में ग्वादर में तरक्याती कामों में सर फहरिस्त मैरीन ड्राइव की तज़य्युन व आराइश, मैरीन ड्राइव के अतराफ़ में पब्लिक पार्क्स की तामीर, सनसेट पार्क की तामीर, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे की तकमील और इफ्तिताह, इसके साथ साथ ग्वादर सी पोर्ट को ऑनलाइन किया जाना और वी बुक सिस्टम की फराहमी, पाकिस्तान के LNG टर्मिनल का ग्वादर पोर्ट पर इफ्तिताह और ट्रेड और अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का आगाज़ है। इसके साथ साथ ग्वादर में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए ईरान से 100 मेगावाट बिजली लेने का मुआहदा, ग्वादर में पीने के पानी की फराहमी, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का संगे बुनियाद, GDA हस्पताल की अपग्रेडेशन और कैपेसिटी में इजाफा और नए इंडस हस्पताल का संगे बुनियाद, यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी वगैरह और बहुत से मज़ीद तरक्याती कामों का होना इस बात की दलील है कि ग्वादर आने वाले वक्त में पाकिस्तान के बड़े शहरों में शुमार होने के साथ साथ इस पूरे खित्ते में एक अहम स्मार्ट पोर्ट सिटी बनने जा रहा है, जो कि लैंड लॉक्ड इलाकों को गहरे पानियों तक आसान रसाई देगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ नया हवाई अड्डा तामीर किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का ही नहीं इस पूरे खित्ते के बड़े हवाई अड्डों में शुमार होगा। यहाँ तरक्याती और तामीराती काम दिन रात जारी है, जिसका जायज़ा आप दिखाई जाने वाली वीडियो क्लिप से ले सकते हैं। इस हवाई अड्डे की तामीर के बाद ग्वादर में न सिर्फ लोगों की नकलो हमल आसान होगी, बल्कि कार्गो वगैरह को भी बड़े पैमाने पर शुरू किया जा सकेगा। हमारे इस YouTube चैनल पर ग्वादर के मुतल्लिक़ अहम और ठोस मालूमात आपको पहुंचाना हमारी अवलीन तरजीह है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। The eco standards and the international standards of airports. And what is this 4F? If just explain it briefly. Yes, the 4F means the length of the airport and is bigger than 1,800 meters. So where we are standing right now, Tariq, if you can show the place where we are standing right now. What's this? The place we are standing now is apron, and this apron has been completed till now. Apron is for the parking place of airplane, yes, of the jets. Okay, so this is where the jets will be parked. Yes. And this building which is being constructed here. The building coming to our site is a passenger terminal building, and it is also, I think, a landmark and in Pakistan, because the shape of this terminal building is like a phoenix, and the flying bird, flying phoenix. Okay, and it seems like has wings after the completion, and we can see the real image of it. So you mean to say the structure is very unique in shape? Yeah, it is a very unique shape, and in Pakistan. In Pakistan. Yep. And you were also telling me something about the 4F. How many other airports does Pakistan has, which has this 4F state of the 4F infrastructure? I think in Pakistan, as we know that the first one is Islamabad International Airport. The second one is our airport, the Gwadar International Airport. So prior to this Gwadar International Airport, there was only one, or we can say currently Pakistan has just one 4F airport. Yeah, the existed 4F airport in Pakistan now is only one in Islamabad. The second one is New Gwadar International Airport. Therefore, this is also the special of this airport. Okay. And
just the brief introduction of this project. When was it started? This project has been started officially in 31st October 2019, and according to the design, this project will be completed within 36 months. The duration will be 36 months. But as we know that because of pandemic in the whole world, and there will be a bit delay of this project. But now the Chinese side and Pakistan side, and we are working hard and working together to expedite the progress of this airport. ग्वादर में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।